right. So the meeting is being live streamed. So I'll just share the link of the live stream on Facebook, so that if you get logged out from this webinar, you can, and if you're finding difficult to log in through Zoom, you have the link to watch on Facebook, right? So I'll share that link here. Just give me a few seconds. Okay. So I'm posting the link. Chat. Just I posted the link in the chat. So if you get logged out of Zoom, you can watch on Facebook. So that's why I took some time for the benefit of all. So neuromusculoskeletal problems. See, I'll just tell you briefly how this webinar will proceed. I'll give a brief introduction, about 4 to 5 minutes. After that, we'll play a recording of Swamiji, in which he explains what Ashtanga Chikitsa is all about, because this is new to most of the people here. ये काफी नई तो नहीं कहेंगे, बिकॉज ये हमारे पुराने कल्चर का पार्ट रहा है, इंडियन कल्चर का, बट आज के दौर में ये एक नया कहा जा सकता है. सो स्वामी जी विल एक्सप्लेन दैट इन द वीडियो, and after that we'll share some experiences of people who joined the Ashtanga Chikitsa program in our previous workshops and classes. और उसके बाद फिर स्वामी जी लाइव आएंगे टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन. स्वामी जी लाइव आएंगे उसके बाद at the end of the webinar to answer all your questions. So you can prepare your questions or you can write in the chat just now along with the problem that you are having, so that we can take up your question with Swamiji. Okay, so give me a few seconds and I'll share my screen with all of you. Okay. Are you able to see my screen? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Okay, okay, fantastic. So we'll alternate between Hindi and English. हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम यूज करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग समझ पाए, so that maximum people can understand. अष्टांग चिकित्सा फॉर न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स. नाम से जैसे लगता है, just from the name itself, it looks like something which is a traditional kind of a therapy. नाम से ऐसे लगता है कि कोई हमारी पुरानी पद्धति रही होगी ये. Okay, so ऐसा ही है. I welcome you all to Ashtanga Chikitsa webinar. My name is Anil Chauhan and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we'll be present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from. Ashtanga Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs and functioning at optimum levels. We'll take up the question in the end, so you can keep on typing. No problem with that. I'd like to introduce you to Swami Rajvibhu. He's a rare Kumbhak yogi, and what Kumbhak is, you'll get to know in a short while. कुंभक योगी स्वामी राजविभू से आपका परिचय कराता हूं. स्वामी जी काफी लोगों की हेल्प कर चुके हैं, and he's already helping a lot of people to come out of their chronic ailments, not just in India but Europe and US as well. And he's taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. So at Avisa Healing, we are reviving this Ashtanga Chikitsa
जो खो गई थी, ये जो चिकित्सा है इसको वापस स्वामी जी रिवाइव कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, जो पहले हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट होती थी, बट इट हैज बीन लॉस्ट, फॉरगॉटन, and that at Avisa we are reviving it. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's the purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of the human body. Who this webinar is for? ये webinar किनके लिए है? This is for people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. ये उन लोगों के लिए है जो टेम्पररी या अस्थायी चिकित्सा या पद्धति से थक चुके हैं और एक नेचुरल सॉल्यूशन या एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं. एंड दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ इन देयर ओन हैंड्स एंड आर विलिंग टू वर्क ऑन देमसेल्व्स टू कम आउट ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स. अगर एक परमानेंट सोल्यूशन है तो हमें अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा. तो अगर आप तैयार हैं उस अपने ऊपर, अपने बॉडी शरीर के ऊपर काम करने के लिए, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है, वेबिनार है. न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स with Ashtanga Chikitsa, freedom from pain and medicine. That's the purpose. The 8 software or Sharir that Swamiji will talk about in detail. These are Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosh Sharir, Marma Sharir, Praman Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti Sharir, Vikriti Sharir. तो ये क्या है, स्वामी जी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. अष्टांग चिकित्सा कैन क्योर. अष्टांग चिकित्सा से हम क्या क्या चीजें, क्या क्या बीमारियां हैं या क्या क्या क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं जो ठीक हो पाती हैं. नी पेन, लोअर बैक पेन, hip issues. There are a lot of other diseases also, other ailments also, but these are some of the common ones. And I'll ask Neha to post in the chat the list of all the problems that Ashtanga Chikitsa can address. And then drop foot, spine-related issues, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, nerve issues, IBS. There are a long list of diseases that this addresses, Ashtanga Chikitsa addresses. These are some of the very common ones. Let's hear from Swami Radvibhu. Just give me a second, and without wasting much time, I'll just play the video, and after which, towards the end of the webinar, Swamiji will be live to answer all your questions. Just give me a second, please. You can keep sharing your problems along with your phone number so that we can get back to you later on also and talk to you personally after the webinar. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया?
No. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है, वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. द डॉक्टर विल स्टिल से देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा
क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? डिड दे हैव प्रॉब्लम एट दिस एज? नो. सो व्हाई डिटोरिएशन और द प्रॉब्लम वाज नॉट हैपनिंग एट दैट टाइम टू दिस स्केल? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more?
It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark?
You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे। सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है। There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है। नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as kaudi. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है। Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा। अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें, just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें। When you pull, what do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath, yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak, it is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा। You lose excess of weight, जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा। So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment, एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean.
वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज cannot rejuvenate your organ. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. So how will it happen? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक एक्सपेरिमेंट करें. Now keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. You are making an external effort. By holding your breath, you are making an external effort. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं. So how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction.
breath hold and direction, that hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now
टिश्यूज, ऑर्गन, जॉइंट, मर्मा सब कुछ तैयार हो गया. नाउ यू फंक्शन, यू लिव योर लाइफ, यू डू मूवमेंट, यू डू फंक्शन. काम होता है ना. तो फंक्शन, देर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटीरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मीन्स थ्री थिंग्स: मटीरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these word called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata, Pitta, Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again, there is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs.
she couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking about now, I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body, how much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics, isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force
which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है. You don't even know, notice, but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें stress होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक force के बारे में बात किया. The upward force is called Udana. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it Udana. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root Udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense. It is designed for petrol.
So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है, ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you everyone for listening to Swamiji so patiently. So what we'll do now is we have Jaya ma'am and Anand ma'am who are participants from our previous batches. So I'll just invite them to share their experience, and after that I'll share all the details of the program, the classes, the fee and everything. आप काफी लोग वेट कर रहे होंगे कि प्रोग्राम डिटेल्स को जानने के लिए. तो अभी हम जया मैम और आनंद मैम से उनका एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं. जया मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो सर. यस मैम. हेलो. हेलो. हाँ नमस्कार. ma'am. नमस्कार. मैं वीडियो चालू नहीं कर सकती हूँ. ओनली No ऑडियो problem. चलेगा? हाँ, ओनली no ऑडियो problem. चलेगा. No problem. सर मैं 9 वीक से ये अष्टांग चिकित्सा का ट्रीटमेंट ले रही हूँ और रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही हूँ. सुबह सुबह मेरे जॉइंट पेन तो बहुत रहता था और साउंड करता था. तो जब से ये कुंभक चालू कर रही हूँ तो बहुत रिलीफ हो रहा है और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ सुबह. और जॉइंट पेन में सुधार आ रही है धीरे धीरे से. और जो गिडीनेस वगैरह रहता था वो सब बहुत ही मतलब प्रोग्रेस, अपने आप में बहुत प्रोग्रेस फील कर रही हूँ हेल्थ में. बस यही मेरा कहना है. थैंक यू अष्टांग चिकित्सा एंड राजवी भाव विभू जी स्वामी जी. ओके सर, कैन यू Thank you, हियर मी? ma'am. Yes, ओके yes. सर. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you for coming. Now I'll just invite Anand Rathore ma'am to please share her experience. नमस्कार स्वामी जी. हेलो. जी मैम, बोलिए. सुन हाँ पा. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार स्वामी जी. मैं 9 मंथ से आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट किया मैंने. हेलो. जी जी, अब सुन रहे हैं. हाँ 9 मंथ से मैं कर रही हूँ और मेरे को एक्चुअली में रोमेटो आर्थराइटिस पॉजिटिव था, अस्थमा भी था मतलब उसके बाद में जब मैंने आपका ये कुंभक चिकित्सा शुरू की है उसके बाद से मुझे धीरे धीरे अब तक बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है. जो थाइज में स्टिफनेस थी वो काफी रिड्यूस हो गई है और जैसे इतना एनर्जी बहुत ज्यादा थी, छींके आना है बात वो तो ऑलमोस्ट कम हो गई है. और सेकेंडली मुझे इतना यथार्थिक फील होता था वो काफी अभी एनर्जेटिक हो गई. दिन में मतलब सोने की इच्छा नहीं होती, जैसे कुछ कुछ करते ही रहो. तो ओवरऑल मेरा जो एनर्जी लेवल काफी हाई हुआ और शरीर में जो पेन था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है. तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, धन्यवाद मैम आपको टाइम देने के लिए और यहाँ आने के लिए. ओके, थैंक यू. तो अब हम पूरा प्रोग्राम डिटेल जान लेते हैं. लेट्स गेट टू नो ऑल द प्रोग्राम डिटेल्स, व्हेन आर द क्लासेस स्टार्टिंग एंड एवरीथिंग. जस्ट गिव मी अ few seconds and I'll just share my screen. हो गया.
Are you able to see my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Okay. Good. Okay, so let us know about the Ashtang Chikitsa online program details. काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि क्या डिटेल्स हैं, क्या फी है, क्या कैसे है, जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, जूम ऐप के ऊपर क्लासेस होती है. और कौन कंडक्ट करते हैं? ये ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स होते हैं जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं. स्वामी जी trains these mentors and they'll be conducting these classes. Program module, there'll be 3 modules in the program, module 1, module 2 and module 3. और वात पित्त कफ, जैसा कि स्वामी जी ने अपने वीडियो में बताया कि इसमें 3 चीजों को बैलेंस किया जाता है, वात पित्त कफ. ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल इज 21 days, सो टोटल ड्यूरेशन 63 days. इस प्रोग्राम का टोटल ड्यूरेशन रहेगा 63 दिन इसका टोटल ड्यूरेशन है. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. अल्टीमेटली यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल 3 मॉड्यूल्स एज पार्ट ऑफ द होल प्रोग्राम, बट यू विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1 और वात मॉड्यूल. 9 plus 1, 10 weeks. Why 1 week extra? You'll come to know in a short while. 10 हफ्ते का टोटल प्रोग्राम है. एक एक्स्ट्रा हफ्ता किस लिए है ये आप थोड़ी देर में जान जाएंगे. There will be 2 live classes every week, out of which one will be the learning class or the main class and one will be the mentoring class. 2 क्लास रहेंगी हर हफ्ते, एक मेन क्लास और दूसरी रहेगी प्रैक्टिस क्लास. और आप सभी को क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी थ्रू अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. एक लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? आप प्रोग्राम फी पे करते हैं और एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है. देयर इज अ स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग दैट वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव स्टेड बैक. उसके बाद आप एक पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिल अप करते हैं. देन यू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म so that we can create login ID to access all the recordings, and then you start taking classes starting with module 1. और उसके बाद आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 जो है उसके साथ. टोटल क्लासेस, module 1 has 6 classes, out of which 3 are learning and 3 mentoring classes. Same is for module 2 and module 3. So total 18 classes, 1 plus 1 customization class. ये customization class क्या है? What is this customization class? We'll come to know in a short while. So total engagement is of 10 weeks. Total जो आपके साथ प्रोग्राम जो ड्यूरेशन रहेगा आपका वो 10 वीक्स का, 10 हफ्ते का रहेगा. Classes starting for 89. This is the 90th batch actually, जो 25 जुलाई से स्टार्ट होगा Monday at 7 PM. This is the 90th batch that will be starting from 25th July. After that, module 2 will start from 16th August and module 3 will start from 7th September. So ultimately, you will be completing all 3 one by one. For module 2, now mentor classes or the practice classes. These are on Thursdays for module 1. For module 2, these are on Fridays and on Saturdays for module 3. We'll share all these details in WhatsApp group as well as in chat here also. तो आपको लिखने की, याद रखने की जरूरत नहीं. You don't have to remember. We'll share all these details in WhatsApp group as well as in chat here. What is the class experience like? These are live sessions as I already told you. Mentors watch all the participants in the practice classes and in the main classes too. Lot of you may be having this doubt or this question in your mind that how is it possible through an online session? Because we get to hear this question every time we start our batches. See, this is the 90th batch we'll be starting, and there are more than 1,500 previous participants who attended live classes only. So we are experts at teaching this therapy online, so don't have to worry about it. आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि ऑनलाइन में कैसे सिखाएंगे, क्योंकि हम ये 90 वाला बैच अभी स्टार्ट होने वाला है और 1500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें
पुराने क्लासेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो हमारी जो एक्सपर्टीज है वो ऑनलाइन थेरेपी सिखाने में है, तो आप उस तरफ से निश्चिंत हो जाइए. जस्ट बी अश्योर्ड दैट हाउ दिस विल बी कंडक्टेड, बिकॉज वी बीन कंडक्टिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम. उसके अलावा यू विल गेट रिटन इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, and then session recordings, as I already told you, session recording or the class recording. This will be available to you through a login ID and password. There will be a lot of extra things also that will be shared with you. काफी चीजें एक्स्ट्रा होंगी जिसमें मेंटल प्रैक्टिसेस होंगी, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव दिया जाएगा. माइंड यू, दिस इज नॉट अ डाइट प्लान, दिस इज अ डाइट पर्सपेक्टिव एज टू हाउ टू यूज फूड सो दैट इट सपोर्ट्स योर बॉडी. खाने को किस तरीके से आप पकाएं, किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो आपके शरीर को फायदा करे बजाय नुकसान करने. और उसके अलावा सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस हैं जो शेयर किए जाएंगे, and a lot of knowledge will be shared with all of you. Now, before I come to the actual fee of the program, I'd just like to take your attention to this slide here. यहाँ थोड़ा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम कितना ऑलरेडी एक्सपेंस कर रहे होंगे जस्ट टू मैनेज द डिजीज. हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए कितना ऑलरेडी हम एक्सपेंस कर रहे होंगे. क्यों ये जरूरी है? बिकॉज ये जानना जरूरी है कि हमें इस थेरेपी में अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फी और द मनी, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी, सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट ऑल यू आर गेटिंग कंपेयर टू व्हाट ऑल यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग. So yearly, if you calculate, you could be spending between 6,000 to 12,000 every year on just the doctor's fees, depending on the city you live in and the kind of doctor you are consulting. If you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending, and medicine could be another 15,000 to 30,000. So total, if you do all three, 33,000 to 72,000 per year, you could be already spending on just to manage your disease. And we won't talk about side effects of allopathic treatment because everybody knows about it. So ये इस टाइप का ऑलरेडी हम शायद पैसा खर्च कर रहे हैं. And before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. और ये भी जानना जरूरी है ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो जाए ये किन लोगों के लिए है. So that it becomes very clear who this program is for. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Although this therapy may work very fast for some people because depending on the system, depending on the momentum of the disease and a lot of other factors. लेकिन आप अगर जैसे आदत हो जाती है हमें कि कोई परेशानी है, कोई पेन है, एकदम से हम एक टैबलेट खा लेते हैं और आराम मिल जाता है, चाहे वो टेम्पररी हो, बट स्टिल इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. सो दिस इज नॉट अ मैजिक पिल. And this is for who are not ready to work on their body. See, this is a permanent solution, but you need to work on your body. You need to be prepared to work on your body. Give your body some time, and that's how you can come out of it. So if you're not ready to work on your body, then this program is not for you. And this is not for those people who cannot invest 60 to 70 minutes every day on their research. जो लोग 60 से 70 मिनट अपने ऊपर नहीं लगा सकते हैं, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको समय देना होगा. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. इम्पेशेंट से कोई चीज हासिल होती नहीं है, सिर्फ टाइम खराब होता है. क्लियरली इट हैज टू बी अंडरस्टूड. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स. About say 70 to 80% in each webinar, and right now also people looking for some tips. कि एक webinar attend करेंगे उनको थोड़ा tips मिल जाएगा. They'll attend another webinar, they'll get some tips. See, if you're looking for a permanent solution, tips won't help you in any way. In fact, they may harm you because you attend a webinar, an expert says something, you apply those things, you attend another webinar or watch a video on YouTube. Then the expert there, he or she says something completely opposite to what the other expert had said. So who do you follow? इनको follow करेंगे आप, because a lot of things are there. So tips के ऊपर healing नहीं होती है. Healing does not happen through tips. It has to start from one point, it has to end at another point. And the people who are looking after you during this process,
that also makes a lot of difference. So this is not a free treatment, and this is not to give you any tips. Now, what you get in the program, that is more important. Pran Shakti diagnosis for root cause determination. See, this alone in itself could be worth the total cost of the program. सिर्फ ये डायग्नोसिस ही पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट आपके रिकवर कर सकता है. वो कैसे? बिकॉज दिस डायग्नोसिस हेल्प्स टू डिटरमिन द रूट कॉज. आपकी डिजीज की जड़ क्या है, आपकी बीमारी की जड़ क्या है, ये इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस से पता लगता है. और ये नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है जो स्वामी जी कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन में. ये होता कैसे है? आपको एक फॉर्म मिलता है. यू गेट अ फॉर्म इन विच यू आर आस्क्ड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर ब्रेथ एंड ऑन योर इमोशंस, एंड along with that you need to upload your selfie photograph. The face should be very clear in this, and the photograph has to be without any specs. अगर आप चश्मा पहनते हैं उसके बगैर आपको फोटो भेजनी है. And in case of ladies, no makeup. So when these two things go to Swamiji, he is able to know the root cause, जड़ क्या है, और उसके आधार पर फिर वो आगे थेरेपी को कस्टमाइज करते हैं, उसको चेंज करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं. Now, second point is there will be one main class of 60 to 90 minutes duration and a practice class of 60 to 90 minutes duration. So, 2 classes every week. हर हफ्ते 2 क्लास. Online course access for 6 months. After the therapy is over, after the 10 weeks are over, the recordings of all the classes will remain with you for the next 6 months. जैसे ही आपका 10 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद उसके 6 महीने तक आपके पास सभी रिकॉर्डिंग रहती है. तो दिस इज इनफ टाइम टू लर्न ऑल द क्रियाज बाय हार्ट. ये इनफ काफी समय हो जाता है कि आप जिसमें सीख सकते हैं. 6 महीने में आप कंठस्थ कर सकते हैं सभी क्रियाओं. वीडियोज ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास. ये क्लास रिकॉर्डिंग से अलग कैसे है? क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा पूरा 60 मिनट 90 मिनट का जितना भी क्लास है. क्लास रिकॉर्डिंग वुड बी ऑफ 60 to 90 minutes, and this videos are of kriyas taught in those classes separately. So some kriya may take 2 minutes, some may take 10 minutes, some may take 5 minutes, 15 minutes. So you need not watch all the recording, the whole recording of the class of 90 minutes. You just watch that particular kriya video and do your own practice. So these are different, and there will be written instructions. Written instructions भी आपको मिलती हैं. कुछ लोगों को पढ़कर करना पसंद होता है, कुछ लोगों को वीडियो देखकर करना पसंद होता है. Lot of people watch and do, and lot of people read and do. So whichever way you feel convenient, you can do that. Both are provided to you. There will be a private WhatsApp group to ask your doubts, questions, 6 days a week. Sunday is off for our mentors. So you can still ask on Sundays, but answer will be given on Mondays. This is the group, and this will be your home for the next 9 or 10 weeks. Everything related to the program, the kriyas, you'll be asking your doubts here, because twice a week you'll be live with us. On the remaining 5 days, when you are practicing alone, the 5 दिन आप हमारे साथ नहीं हैं, हफ्ते में 2 दिन हमारे साथ हैं लाइव. 5 दिन अगर आपके मन में कुछ शंका आती है, कुछ डाउट आता है क्रिया को लेकर, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं. दिस इज द ग्रुप वे यू आस्क ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू द क्रियास एंड द प्रोग्राम. आवर मेंटर्स विल आंसर एंड गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. Individual participant progress tracking feedback. Every day you'll get a form to fill about your condition, what you're progressing and everything. So that is taken care of on a daily basis. ये हर दिन आपको ये फॉर्म में अपना प्रोग्रेस भरना होता है. And then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. A lot of you may have this question in your mind. You may be thinking that if different people are there with different problems, so how come this therapy is working for everybody? In this 9 weeks, a lot of things are happening. One, the Vata, Pitta and Kapha of the body is being balanced. Second important thing that is happening is that the 3 main alignments of the body, the thighs, as Swamiji already told in the video, the thighs, navel and the chest factor. These are aligned during these 9 weeks.
The third main thing that is happening is you are taught to control your exhalation. Exhalation ज्यादातर लोगों का controlled नहीं होता है, right? So this therapy is based on controlled exhalation. और इसी वजह से कुछ लोग जो कपालभाति करते हैं उन्हें मना किया जाता है कि 5-6 महीने तक आपने कपालभाति नहीं करना है, क्योंकि उसमें फोर्स्ड एक्सहेलेशन होता है. इट्स फोर्स्ड एक्सहेलेशन इन कपालभाति, सो दैट्स व्हाई यू आर टोल्ड टू अवॉइड इट फॉर द 5 to 6 months. So therapy customization में क्या होता है, based on your प्राण शक्ति diagnosis. If you remember in the first point I told you that there is a diagnosis involved. So based on that diagnosis, every participant's therapy, every participant's kriya will be fine-tuned and customized as per the diagnosis, as per the root cause determined in that diagnosis. तो सभी लोगों को अलग अलग क्रिया मिलती हैं which is based on the diagnosis. Then extended support for 30 days after the program is over. We understand that this is an online program, and online programs, there are different challenges in an online program compared to a physical location based program. तो आपको 30 दिन का extra support मिलता है. After the 10 weeks are over, you get 30 days of extended support. So this is inclusive in the program fee only. No extra charge for this. So please be assured, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक से नहीं समझ पाए. 30 दिन का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है. All these points I've already talked about. Program fee for अष्टांग चिकित्सा, जिसके लिए ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे हुए हैं, 9,500 only. But as I promised you that there is a special webinar pricing, so that maximum people can afford it. It's just 5,500 only for the complete program. The diagnosis, the 18+1, 19 classes, the support, 30 days of extended support, everything is inclusive in this 5,500 only. This is a 10 weeks program, 19 classes. I did a little math here. If you divide 5,500 by 19 classes, it just comes to 290 per class, plus all the 10 benefits that I talked about in great detail here. So everybody can afford it. Everybody can do this program if they want to come out of their health conditions or the neuromusculoskeletal problems. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group. And after that, you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending. Then you start the first module and start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. Payment details we'll share in the chat as well as in WhatsApp group also. Now, I'd just like to stop here for some time and talk about the super team that we have, because howsoever this program, howsoever good this program may be, but if it is not supported properly by a team, then you may not get all the benefits. So we have a full-time people, full-time staff members who support you. Rachna Shimal Bothra, she is the program director. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of all the batches, the timing and everything. Pooja Chopra, she is a senior mentor. Ranjana Swam, another mentor. Sukesh Raj, another mentor we have. R.D. Gupta ji, another mentor. Neha Upadhyay, she is in charge of enrollment. So she'll be the person you'll be talking to the most before enrolling. And Anil Chauhan, that's me. I'll be answering all your questions in the WhatsApp group after the webinar. Since we have shortage of time, so Swamiji may not be able to answer all the questions, but don't worry, you can post all your questions in the WhatsApp group and I'll be answering all those questions till 11 p.m. tonight. So don't worry, all questions will be answered. Himanshu Reddy, he is the technical person who takes care of all the login IDs, password, the videos, the class recording uploading to the course dashboard. So if your video is not playing, if your written instructions are not being downloaded, so he's the person you will be getting help from. So we have a proper team in place to guide you, help you on your way to a permanent solution. And with this, I come to the end of my part, and I just see Swamiji has joined. Yes, he has joined. And without wasting much time, I'll put Swamiji on spotlight. Swamiji, namaskar.
So I'll just take up the questions which people have asked. I'll start from the top. I'll start from the bottom. That's easier. I get free from job hours only by 9:30 p.m. How can I attend these modules in this case? See, like we told you, the recordings are there. A lot of people from overseas join these courses. So there's a time difference there also. So what they do is they watch the recording, do the kriyas, and like I told you, there's a WhatsApp group where you can ask your doubts. So watch the recordings, do the kriyas. If in case of doubt, ask in the WhatsApp group. So that way you can do it. Is the above bank transfer versus bank account? Yes. Okay, sir. Let me see. Question for Swamiji. Timings of program already shared. One should eat non-veg or not for such good health. Swamiji. One should eat non-veg or not. See, the thing is, once somebody asked a guru, what is right for me, what is not right for me? So the most appropriate answer would be, whatever you are capable of doing and not challenged by the result of it. That is what you can always do. For example, so a story says Shankaracharya was going and all the disciples followed. So whatever he did all the disciples used to do that. सभी लोग गुरु को फॉलो करने लग जाते हैं जब, तो नकल करने लग जाते हैं ना. तो क्या हुआ? He wanted to teach a lesson. So he was passing by a brewery, है ना, जहाँ पे दारू बनती है ना, उसके पास से जा रहे थे. तो उन्होंने एक बोतल उठाया, he picked up a bottle and drank whole. And the disciples, they jumped in joy. Oh, आज तो मजा आ जाएगा. They all drank, right? So when again next village was butcher's village, सारे जो मांस काटने वाले सब वहां पे थे. He picked up a piece of flesh and ate it. वो मांस खाया उन्होंने, तो disciples ने भी खाया. उन्होंने कहा वाह, आज तो बहुत मजा आ रहा है. So next was a village of iron smiths, है ना, लोहारों का गांव था. तो he took up a cup of molten iron, पिघला हुआ लोहा लिया और पी गए. कोई भी शिष्य सामने नहीं आया. He asked why? आप तो नकल कर रहे थे मेरी. कह रहे नहीं, हम तो काबिल नहीं है इसके. तो उन्होंने पूछा आपको कैसे मालूम कि आप जो पहले खा चुके उसके काबिल हैं? तो अगर आप किसी का कर्म दोष झेल सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं. नहीं तो आपको देखना पड़ेगा ना आप क्या कर्म दोष नहीं झेल सकते. So it should be in your experience what is good for you or what is not good for you. So you should observe your life very very carefully. बहुत ध्यान से देखिए ये करने से आपको होता क्या है, ये खाने से फील कैसा होता है. जो फीलिंग आपको परेशान नहीं करे या आप उससे परेशान ना हो, वो आपके लिए सुगम है, वो आपके लिए ठीक है. जिससे आप परेशान हो जाएं वो आपके लिए ठीक नहीं है. तो कुंभक जो करता है उसके सेंसेस इवॉल्व होते हैं. और फिर हम ये नहीं कहते स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नहीं ये करना ये नहीं करना हम नहीं कहते. कहते व्हाट इज गुड फॉर यू, सेंस इट. आप सेंस कीजिए और देखिए और आप वो कीजिए. Okay. Galaxy 20 plus, right? Severe body pain, cramps, burps only at night. I am an multiple sclerosis patient. What do you mean by multiple sclerosis when you say? ये multiple sclerosis होता क्या? ये तो एक अंग्रेजी का नाम है. आपको क्या आपको मालूम है कि ये होता क्या?
तो आपको कुछ कहा गया होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसा कैसा है, क्या कुछ है, ऐसा कुछ है। नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ब्रिंग एवरी टर्मिनोलॉजी इनटू योर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। हर शब्द का आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एक्सपीरियंस में उसका मतलब क्या है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस में उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं और आपको भी पता चलेगा कि इससे कैसे निकल सकते हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, है ना। पहले मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता देता हूं, फिर बाकी आपके प्रॉब्लम्स जो है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इफ यू गो हाई अप ऑन अ हिल, किसी पहाड़ी पे ऊपर चले जाए, सांस लेने में तकलीफ आएगी ना, ऊपर जाके सांस लेने में तकलीफ आएगी, तो आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं है ना उस सिचुएशन में। आपका बॉडी अनकंफर्टेबल जब भी हो जाता है तो बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करता है? शरीर इंटेलिजेंट है कि नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। दिस बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। You are getting problems mostly in the last 50 years, 50 to 100 years. Otherwise, for millions of years, human body hasn't given any problem. Or human body actually doesn't give problem. अगर आप इसको रहने जीने लायक ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा हाल? तो पहाड़ी डिफिकल्ट एनवायरमेंट क्रिएट्स अ डिफिकल्टी इन यू। आपके अंदर डिफिकल्टी होगी, आपका इम्यूनिटी ऊपर हो जाएगा बचाने के लिए, जस्ट टू सेव यू। योर इम्यूनिटी विल गो हाई और योर एड्रिनल एक्टिविटी विल गो हाई। और सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल होती है वो ठीक हो जाता है। बट व्हेन द इम्यूनिटी गोज हाई, व्हेन योर एड्रिनल एक्टिविटी गोज हाई, इट पुशेस इन लॉट ऑफ हार्मोन्स, शुगर, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। या तो बचो, भागो, या तो लड़ो। लड़ना या भागना, उसके लिए आपको जितने हार्मोन्स चाहिए, उसके लिए आपको एड्रिनलिन चाहिए तो आपके ब्लड में एड्रिनलिन आ जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई चाहिए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। शुगर चाहिए तो शुगर आ जाएगा। Now, once there is a threat, you fight a threat or run away, you will utilize all those hormones and stuff. आपने अगर लड़ा आपने या भाग गए, दोनों में आप उसको इस्तेमाल कर रहे। लेकिन अब अगर आप देखें अपने चारों ओर एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट को पोल्यूट किया कि नहीं हमने? कर दिया ना। ये तो आपने सुना, कम से कम पढ़ा सुना कुछ ऐसा है। सो एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया तो ये एनवायरमेंट हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया। जैसे कि आप पहाड़ी में ऊपर चढ़े जाए, मुश्किल एनवायरमेंट, वैसे ये मुश्किल एनवायरमेंट। इस मुश्किल एनवायरमेंट में आपका इम्यूनिटी फैक्टर जो है वो ऊपर जाता है, क्योंकि उसको बचाना है। आपको पता नहीं, शायद आपको लगता है वो हम तो बहुत डेवलप हो गए, मैं तो फोन पे बात कर लेता हूं, है ना। आपको तो यही लगता है, मगर आपके शरीर को लगता है अरे ये कौन से एनवायरमेंट में आ गए हम, तो मुझे तो बचाना है। शरीर सोचता है मुझे बचाना है, पर बचाने के लिए ना तो आप लड़ रहे हैं, ना तो भाग रहे, ना तो लड़ सकते, ना तो भाग सकते। हमने तो इतने सारे डिफिकल्ट फैक्टर्स क्रिएट, एनवायरमेंट को खराब कर दिया ना। पानी कहां है? पानी कहां है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स कहां गए? आपके पांव के नीचे पानी कहां है? कहां गया? 20 फीट, 50 फीट टू 5000, 10,000 फीट। डिफिकल्ट एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया। क्या खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। आपके लिए बना था क्या? नो, योर बॉडी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट माई फूड, ये मेरा भोजन नहीं है। उसको तकलीफ होती, पर आप तो खा रहे हैं ना, मसाले डाल के उसको किसी तरीके से ज्यादा पका के इसको अंदर ही तो ले जाना। तो आप डिफिकल्ट फूड खा रहे हैं तो वो भी रिस्क है, एनवायरमेंट रिस्क है ना, कंडीशन रिस्क है, आपका स्कूल रिस्क है। स्कूल में कितनी चीजें पढ़ी थी आपने, क्या इस्तेमाल किया लाइफ में? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितनी सबने पढ़ा ना? कभी यूज किया? कभी नहीं। इट्स अ रिस्क। आपका इम्यूनिटी ऊपर जाता, फिर कोई लड़ने के लिए कुछ है नहीं, कंफ्यूज हो जाता है। दिस कंफ्यूज्ड इम्यूनिटी इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये तो हमने ही किया ना। स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, सासू माँ की शक्ल देख के इम्यूनिटी हाई हो जाता है, बहू की शक्ल देख के ऊपर चला जाता है इम्यूनिटी, क्योंकि रिस्क आ गया। मगर ना तो लड़ सकते ना तो भाग सकते। बॉस को देख के इम्यूनिटी हाई हो जाता है, ना तो लड़ सकते ना तो भाग सकते। सो आपने अपना लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पूरा ही खराब कर दिया, अगर रिस्की बना दिया तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो होगा ही ना। बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज नॉट समथिंग व्हिच गोज अप टू अ स्केल एंड स्टेज देयर। नहीं, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी अगर आपका ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है।
जिस समय आप अपने बच्चों के साथ खेल लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। मगर ज्यादातर कंडीशन ऐसी है जहां पे रिस्क है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो होगा। पर इसको कैसे लेके आएंगे? जब भी आप एक बात समझिए, इम्बैलेंस हो रहा है ना आपके अंदर, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इम्बैलेंस, किसी को बोलिए आपको धक्का देने के लिए, जस्ट पुश, यू टेल समबडी टू पुश। हाउ डू यू गेट इनटू बैलेंस? बैलेंस बना के रखने के लिए क्या करते हैं? कभी अंदर देखने की कोशिश कीजिए, डू दिस एक्सपेरिमेंट, करिए एक्सपेरिमेंट। केवल कहीं पढ़ लिया, कहीं सोच लिया और आपने मान लिया सच है, ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए, हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा सही जीने लायक। तो पहले अपने आप को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। आप लोग इंडियंस हैं, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, तो किसी को धक्का देने बोलिए और अपने आप को संभालिए। हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? वो बैलेंस करने की कुंजी क्या है आपके अंदर? आप सांस रोक के बैलेंस करते हैं अपने आप को। यानी आपका अगर इम्बैलेंस इम्यूनिटी हो गया तो उसका मतलब खराब क्या हुआ आपके अंदर? कई लोगों को तो नहीं होता, और लोगों को तो नहीं होता ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो उनके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या गड़बड़ हो गई? आपके अंदर बैलेंस करने की क्षमता कम हो गई। उनके अंदर अभी भी बाकी है, आगे चल के हो सकता है गड़बड़ हो जाए। बैलेंस करने की क्षमता का मतलब क्या है? कुंभक वीक हो गया आपका, सांस रोकने की क्षमता वीक हो गई आपकी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? इसको वापस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिना कुंभक किए तो होगा नहीं। तो एक फैक्टर, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं, मैंने बता दिया। मेडिकल टर्म्स में अगर आप इसे पढ़ेंगे, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में दवाई सबसे बड़ा रिस्क है। आप लोग सभी एक ड्रग एडिक्ट है। बचपन से कितने सारे केमिकल्स अपने शरीर में डाल रहे हैं जो कि आपके लिए बने नहीं। ये दर्द की गोलियां आपके लिए होती तो पेड़ पे लटकी होती, तोड़ तोड़ के खाते हैं इनको। तो ये आपके लिए नहीं है। जो चीज आपके लिए नहीं है वो रिस्क क्रिएट करेगा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आपने बचपन से दवाइयां खाई तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो हो गए। तो आपने कभी किसी डॉक्टर से बोला कि जब आपने बताया जब पैदा होते हैं बच्चे तो इतने सारे वैक्सीनेशन करते हैं, उसका इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसके बाद क्यों हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं? आपने सवाल ही नहीं किया। उसी की वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं। दूसरी बात ये, जब आप कहते हैं पेन, एक बात समझिए, पेन डिफॉर्मिटी से नहीं आता। वापस बता रहा हूं, टेढ़े मेढ़े पांव, जॉइंट में कुछ हिल गया, ऐसे देखे होंगे जिनके शोल्डर हिल जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, वो ऐसे करके ठीक कर लेते हैं, कोई पेन नहीं होता। पेन इज नॉट ड्यू टू गैप्स एंड डिसलोकेशन, पेन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। लिवर अगर आपका वीक हो गया तब पेन आएगा। अगर पित्त दोष आ रहा है आपके शरीर में तब पेन आएगा, नहीं तो जॉइंट तो घिसते ही हैं। इतना पेन नहीं आना चाहिए, नहीं तो अष्टावक्र महाराज जी तो चल भी नहीं पाते, 8 जगह से टेढ़े थे। तो इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। योर लिवर इज गोइंग वीक, योर डिटॉक्स सिस्टम इज गोइंग हेवायर। तो आप जो डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, जिस चीज को जैसे समझ भी रहे हैं, वो भी गलत है। अभी किसी ने सवाल पूछा कि जो स्मेल है वो चला जाता है, टेस्ट भी चला जाता है। हमारे पास तो केसेस हैं, उनको कितने सालों के बाद में टेस्ट वापस आया। उन्होंने हमको कोर्स तो ज्वाइन किया ही था उन्होंने, तभी टेस्ट वापस आया, उसके बाद डोनेट भी किया। ऐसा भी डोनेशन क्या, क्योंकि वी हैव आवर सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं। तो ये वापस भी लाना है आपको, तो ये आपके शरीर की एबिलिटी ही है, उसी को वापस करेंगे, एबिलिटी को वापस लेके आएंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने अंदर के ऑर्गन फंक्शन को और ऑर्गन्स को, तभी वो वापस आएगा। किसी दवाई से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। दवाई केवल इमरजेंसी के लिए रखिए कि कभी अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए उस समय तो ठीक है, लेकिन गो टुवर्ड्स रिवर्सिंग योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स जरूर करने की तरफ में कोशिश करें, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। Okay, next question is from Lakshmi Dishaji. She says, suffering from knee pain, back pain, seizures, varicose veins. Seizures का मतलब वेरिकोस वेन इज वेरी इजी टू हैंडल। सी इफ यू डू कुंभक, वेरिकोस वेन विल, बिकॉज व्यान पक्ष आपका वीक हो गया।
है ना. इफ आई टॉक दीज टेक्निकल टर्म्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको तो कुछ और चीज सिखाया हुआ है ना, बचपन से आपने गूगल भी करते हैं तो वही सीखता है. इट्स अ बिग बिग काइंड ऑफ अ माइंडसेट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड. एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है और सॉल्यूशन किसी को नहीं मिलता. 70% ऑफ द टोटल प्रॉब्लम आर क्रॉनिक, और एक का भी इलाज नहीं, एक का भी इलाज नहीं. तो आप जो सोच रहे हैं ना कि इसको नाम तो दे दिया आपने एक, मगर उसका कोई इलाज नहीं है. नाम देने से क्या होता है, हम भी नाम रख लेते हैं कोई संस्कृत में बड़ा सा नाम, बोल भी नहीं पाएंगे, फिर क्या फायदा. तो वेरिकोस वेन में व्यान पक्ष कमजोर हो जाता है. हम जो प्रैक्टिस आपको सिखाते हैं उसमें 3 चीजें, देयर आर 3 थिंग्स दैट वी टीच यू. फर्स्ट इज अंगन्यासा, हठ विन्यासा, कुंभक थेरेपी. इन कुंभक थेरेपी देयर आर 3 थिंग्स. द थर्ड पार्ट इज व्यान क्रिया कुंभक. तो उसको ठीक करने के, आपके स्ट्रक्चरल इश्यू को हैंडल करने के लिए हम आपको सिखाते ही हैं प्रैक्टिस. नाउ when you say knee pain, this pain and that pain, I explained that it is one of the reason for pain is inflammation in the body. अगर आपके बॉडी का लिवर वीक है, डाइजेशन वीक है, यूरिक एसिड बन रहा है, एसिड ज्यादा हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, आपके बॉडी में पेन आएगा ही है. दूसरा पक्ष जो पेन का है, when you are saying मूवमेंट, जब मूवमेंट में तकलीफ आती है, अगर मूवमेंट में तकलीफ आती है, आपको जोर लगाना पड़े तो भी पेन आए. सपोज करिए आपको चलने से कोई रोक रहा है और आप जोर लगाते हैं, तो अगर आप वीक होंगे तो आपके शरीर में दर्द हो सकता है. नाउ एनी काइंड ऑफ अ मूवमेंट इन द बॉडी इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, एक दिशा में जाता है. व्हेन यू ईट फूड इट गोज इन वन डायरेक्शन ओनली, वापस नहीं आना चाहिए. योर ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट शुड नॉट गो बैक, रिवर्स फ्लो नहीं होना चाहिए. योर हार्मोन्स गो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए. योर इंपल्सेस, सेंसेस, नो नर्व के सेंसेस हैं, वो सेंसेस एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं. तो यूनी डायरेक्शन, आप भी मूव करते हैं तो जॉइंट एक ही तरीके से चलते हैं, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट में आते हैं. यूनी डायरेक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड नाग वायु. नाग वायु यूनी डायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल करता है. तो जॉइंट का इशू एक और फैक्टर की वजह से हो सकता है. इफ योर नाग वायु इज वीक देन यू विल गेट इनटू जॉइंट इशू. स्पेशली इट विल स्टॉप योर मूवमेंट, ये आपकी मूवमेंट को रोक देगा. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर डायग्नोज. इसीलिए हम, देयर आर 84 फैक्टर्स, आपको डायग्नोसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि आपका कौन सा एस्पेक्ट वीक है. आपका व्यान वायु वीक है, नाग वायु वीक है, उदान वीक है, कौन सा वीक है, कौन सा फैक्टर वीक है. तो उसके हिसाब से वी गिव यू स्पेशल मेथड्स. वी कस्टमाइज द होल मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से पूरा कस्टमाइज करते हैं. अच्छा, इसके अलावा तीसरा एक और फैक्टर मैं आपको बता देता हूं. आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक बोल सकता हूं, मगर आपको कोई फायदा नहीं होना. कितना भी ज्ञान मैं यहाँ पे झाड़ लूं मगर कुछ फायदा नहीं होगा किसी का. योर बॉडी इज मैजिक, आपका शरीर मैजिक है. लाखों सालों तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी प्रॉब्लम हो रही है. तो अगर इसको सही सपोर्ट करें तो ये ठीक कर देगा आपको. दैट इज 100% गारंटेड, ये पक्का गारंटेड. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन, स्पेशली इन द केसेस ऑफ फीमेल के केस में क्या होता है, दे हैव अ वेरी वेरी सेंसिटिव प्रोटीन इकोसिस्टम. उनके शरीर में कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कैसे प्रोटीन शरीर को प्रोसेस करता है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है. और पिछले कुछ दशकों से आपको मालूम है ना, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ चल रहा है. मैं बार बार कह रहा हूं, फिरंगियों की बात मानोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. ज्यादा प्रोटीन खाने से हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होता है आपका. दूसरा, थायराइड बिगड़ जाएगा. वन ऑफ द रीजन इज प्रोटीन एलर्जी. थायराइड क्या है, प्रोटीन एलर्जी. प्रोटीन ज्यादा खाने से किडनी पे इश्यू आता है और कैंसर जैसे चीज तक हो सकती है. तो व्हाट हैपेंस, द वे वी आर हैंडलिंग प्रेगनेंसी को जैसे हैंडल करें, एंड द वे फीमेल्स आर हैंडलिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनी फीमेल्स आर गेटिंग इनटू हार्मोनल इंबैलेंसेस. हार्मोनल इंबैलेंस आ जाता है तो क्या होगा, हार्मोन इंबैलेंस, एंड सडनली देयर इज लॉट ऑफ इंबैलेंसेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द डिलीवरी. बॉडी जो है आपको निशानी देता है कि योर बॉडीज रिदम हैज बिकम बैड. दैट इज कॉल्ड ए सीजर. उसको सीजर कहते हैं.
सीजर आप अगर ध्यान से देखिए तो टेम्परेचर डिफरेंस, थॉट प्रोसेस बहुत इधर उधर होने से, इमोशन ऊपर नीचे होने से आपको सीजर आए। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? आपके बॉडी का रिदम बिगड़ गया। रिदम क्यों बिगड़ा? इसके कई कारण हैं। एक कारण है जो दवाइयां आप खा रहे हैं ना, वो आपके शरीर का रिदम बिगाड़ रहा है। दूसरा क्या है, जो लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं उससे बॉडी का रिदम बिगड़ रहा है। इफ यू वुड हैव गॉन टू अ गुरुकुल, अगर किसी गुरुकुल में जाते आज से 500 साल पहले, तो वो आपके ऊपर काम कहां से शुरुआत करते? बिल्डिंग द रिदम ऑफ द बॉडी, आपकी लाइफस्टाइल को फिक्स कर देते। आज भी आर्मी में अगर आप जाएंगे तो पहली चीज क्या फिक्स करेंगे? वो सुबह कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, ये फिक्स कर देंगे। सो इफ यू रिमेन इन दैट एटमोस्फेयर, योर बॉडी विल गेट इनटू अ रिदम, आपके रिदम में हो जाएगा। मगर आजकल फ्रीडम 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 कह के इतना बिगाड़ दिया बॉडी का रिदम, कुछ भी कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, और कहते हैं ये फ्रीडम होता। नहीं, फ्रीडम ये नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है आप एक रिदम मेंटेन करें अपनी लाइफ। तो पहली बात, ये रिदम अगर हम मेंटेन करें तो सीजर्स के एपिसोड बहुत कम होते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में वी आर हैंडलिंग द प्रेगनेंसी वेरी वेरी इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। इसीलिए किड्स आर गेटिंग इनटू अर्ली स्टेज क्रॉनिक डिजीज। 3 साल 4 साल का बच्चा डायबिटिक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट बहुत बच्चों को है। दे आर गेटिंग इनटू अर्ली थायराइड इश्यूज। कैंसर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%। हार्ट इज समथिंग, the strength of heart is decreasing day by day for humanity, for the whole humanity. So इसका मतलब we are handling pregnancy very very badly, and that is why many ladies actually pick up the seizure thing after the delivery. इसको भी अगर आपको ठीक करना है, see, nervous, it has something to do with your neuro system also, but it has something to do with your karmic system also. क्योंकि आप जो एक्शन लेते हैं ना, उसका इंप्रेशन आपके ऊपर आता है। द कार्मिक इंप्रेशन टेक्स अ लॉट। सो कुंभक विल हेल्प यू इन दैट। कुंभक आपको सीजर्स कम करने में बहुत मदद करेगा, बिकॉज यू विल हैव मोर कंट्रोल। सीजर्स वाले लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, दे लूज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग ऑफ देयर लाइफ। इमोशन उनका कंट्रोल में नहीं है, बॉडी कंट्रोल में नहीं है, थॉट प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। कुंभक का मतलब ही क्या होता है? आप जब होल्ड करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं? हाउ डू यू पुश? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। हाउ डू यू पुल? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। हाउ डू यू जंप? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ बियॉन्ड। हाउ डू यू मूव योर बॉडी? वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड। व्हाट हैव यू लॉस्ट? यू हैव लॉस्ट द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। आपके अंदर कमजोर क्या हो गई? कुंभक की क्षमता कमजोर हो गई। अगर इसको बढ़ाएंगे तो कंट्रोल आपका आएगा, and these condition can easily be taken care. इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं हम। सीजर की गोलियां खाने से ये हैंडल नहीं हो। शायद आपको लगेगा इनिशियली कि अभी मुझे कम आ रहे हैं, बट वंस इट टेक्स अ ड्रास्टिक स्टेप, एक जंप अगर ये ले लेगा तो फिर किसी दवाई से कंट्रोल में नहीं आता। एंड दिस इज अ कॉमन नोइंग फॉर डॉक्टर्स। एक टाइम के बाद कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि आपने दवाई के साथ में अपने पूरी बॉडी को इनसेंसिटिव बना दिया। इसके इंटेलिजेंस को ही हम खत्म कर देते हैं, राइट? सो we need to look everything from a different perspective. Only then there will be a solution, otherwise there won't be a solution. ओके, विमला शिमाली जी लिखती हैं, स्पाइन समस्या L4, L5, L3 की वेन दब रही है, घुटने की समस्या। ये एग्जाम्पल मैं हर जगह पे बोलता हूं और आपको भी समझाता हूं कि क्यों हो रहा है। तो गोल गोल चपटे चपटे पत्थर होते हैं ना, फ्लैट थोड़े चपटे हुए पत्थर, ऐसे ले लीजिए 33 स्टोन्स एंड पुश अ रोप, थिक रोप थ्रू देम। बीच में उनके छेद हो और उनको बीच में एक रस्सी डाल, उनको खींच लो, तो सारे जो स्टोन्स हैं वो सारे अलाइन हो जाएंगे ना। अलाइनमेंट स्टोन की वजह से हो रहा है या रस्सी की वजह से हो रहा है?
पर रस्सी भी नहीं, रस्सी की टेंशन की वजह से हो रहा है। आपने जो ये फोर्स लगा रखा है ना रस्सी में, उसकी वजह से अलाइनमेंट है। इसी को व्यान कहते हैं। आई एक्सप्लेन इट अर्लियर ऑल्सो। वेरिकोस वेन जो होता है वो व्यान, स्ट्रक्चर कभी भी गड़बड़ हो रही है आपके बॉडी या किसी टिश्यू का, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग फोर्स इज व्यान। तो वेन्स मोटे हो गए, स्ट्रक्चर नहीं रह पाया उनका ठीक, कहीं कहीं पर भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन हार्ट, हार्ट की फंक्शनिंग, स्केलेटल स्ट्रक्चर, न्यूरो स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर की बात होती है तो व्यान फैक्टर इज समथिंग विच कंट्रोल्स द स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो आपकी कह रहे हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी खिसक रही है और उसकी वजह से वेन्स, सॉरी नर्व्स दब रहे हैं, तो वो खुलेंगे कैसे? नर्व्स वहां से निकलेंगे कैसे? जब आप व्यान को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो स्पाइन का स्ट्रक्चर ठीक होगा, तो नर्व्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो वी हैव हठ विन्यासा फॉर अलाइनमेंट ऑफ द होल बॉडी। हठ विन्यासा नॉट ओनली अलाइन स्पाइन, केवल स्पाइन के लिए ही नहीं है, आपके शरीर में 3 बेसिक अलाइनमेंट चाहिए: नाभि, कौड़ी, नले, navel, middle of chest and thighs. These needs to be aligned. ये 3 चीजें अलाइन होती है तो आपका शियाटिका नर्व जो पीछे ऐसे जा रहा है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाता है और आपका स्पाइन अलाइन होता है। तो स्पाइन अलाइन तभी होगा, ये 3 अलाइनमेंट हम करते हैं हठ विन्यास में, और इसके लिए प्रोसेस है, मगर उसमें बॉडी मूवमेंट होता है। इफ देयर आर पीपल हु कांट मूव देयर बॉडी, दे कैन ड्रॉप द मिडिल पार्ट, दैट मींस हठ विन्यासा, अंगन्यास और कुंभक थेरेपी बैठ के किया जाता है। यू डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, you will build the required strength of your body, and then you will be able to do the body movements, slowly do the body movements, and you'll see you'll come out of all these spine issues, सबसे निकल जाए, because we will be strengthening the Vyana factor apart from aligning the body, है ना? ये इसका solution है। Even if you get operated or do some, get some operation being done on certain part of the spine, वो दूसरी जगह हो जाएगा ना, स्लिप डिस्क या नर्व का जो पुश वहां पे दबना है कहीं और हो जाएगा। सो ओनली व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी यू कैन थिंक अबाउट गोइंग टुवर्ड्स सर्जरी, अदरवाइज फिक्स द फंडामेंटल्स ऑफ योर बॉडी एंड यू विल सी यू कैन कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट टू प्रीटी इजीली। ऐसा कोई बहुत मुश्किल भी नहीं करना होता इन सब चीजों से निकलने के। Aryan Gupta ji writes, neuropathy type 4 CMT, foot drop, balancing problem, curve in both foot, problem in climbing stairs, etc. for 13 years boy. Nerve issue is the most difficult thing to come out of. Nerve issue बहुत मुश्किल है इससे निकलना। अच्छा, नर्व के लिए रीजनरेशन के लिए कोई दवाई नहीं होती। There is no medicine for nerve regeneration, but you can, if you work upon certain factors of your body, nerve do regenerate, nerve regeneration होता है। Now the medical science has come up with a new word called neuroplasticity. That means nerve can regenerate, but we have been saying this for many thousands of years. Nervous system can regenerate. प्रकृति शरीर को अगर आप सपोर्ट देंगे तो regeneration can happen. ये प्रकृति शरीर, प्रकृति means regeneration. ये प्रकृति शरीर को सपोर्ट कैसे दे सकते हैं? रीजनरेशन, नर्वस रीजनरेशन को कैसे सपोर्ट दे सकते हैं? डायरेक्टली थ्रू कुंभक, उसके लिए कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। यू डायरेक्टली एनहांस द प्रकृति एस्पेक्ट और रीजनरेटिव एस्पेक्ट बाय डूइंग कुंभक, बिकॉज रीजनरेशन इज अ सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का ही एक स्ट्रेंथ है। तो बाय इंप्रूविंग दैट स्ट्रेंथ, there are lot of testimonials now, lot of cases now, हमारे पास में बहुत cases हैं सब, foot drop, lock jaw, myasthenia gravis, frozen shoulder, and so on and so forth. There is an athlete, she runs marathon, she stopped running marathon because she got into drop foot condition, again a nerve disorder, और उसके लिए तो लाइफ लॉन्ग के लिए मैराथन बंद हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था। शी केम हियर, डिड कुंभक फॉर 6 months,
and started preparing for marathon. But this is So- a 13 years old boy. This is condition. दो से अच्छा, I thought it is for 13 years that person is suffering. Anyways, for whatever years the person is suffering, the person can come out of the problem. But for a 13-year-old boy, we don't have a program as yet. अभी तक हमारे पास program नहीं है. I want to start a program. I'm not getting the right kind of people. सही लोग नहीं मिल रहे, इसीलिए मैं वो बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू नहीं कर पा रहा. But we will start a program for kids less than 16 years of age. We only take 16 and above in our program. Anyways, you can drop your numbers. We will suggest you some other thing. उसके लिए हम कुछ और चीज suggest करेंगे, and that will be very helpful because we want to revive certain area of therapy, certain therapies called as Rasa Aushadhis. We want to start or revive those aspects because that can wonderfully work in these areas and very fast. बहुत तेजी से वो काम भी करता है. तो we can suggest you कि whom to consult, किससे वो आप ये रस औषधि ले सकते हैं, किससे वो दिखा सकते हैं. तो drop in your numbers with 13-year boy ऐसा करके लिख दीजिए. Somebody will get in touch you और हम आपको हेल्प करेंगे. Okay. Abhishek Gavalli, 52 female, having frozen shoulder for the past 3 months, left side only. डिसअलाइनमेंट, सीधी सी बात, डिसअलाइनमेंट. आपके शरीर में डिसअलाइनमेंट. आप एक गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा इधर उधर ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह में गड्ढे में चले जाते हैं, ऑफ रोडिंग अगर गलती से हो गई या फिर बारिश के दिन है तो अलाइनमेंट कराना पड़ता है ना. पर अपनी बॉडी को तो हम बहुत खराब तरीके से इस्तेमाल करते हैं. हमारी बॉडी का क्यों नहीं अलाइनमेंट करना पड़ता? करना पड़ता, हम कर नहीं रहे. इन आर कल्चर, हमारे भारतीय सभ्यता में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये चीज गांव में बूढ़े, घर में बूढ़े पुराने बूढ़ी औरतें जानते थे. आज भी कहते हैं अरे इसको तो धरण डिग गया. आज भी कहते हैं पेट खराब हुआ क्या करना, धरण ठीक कर लो ठीक हो जाएगा. मगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई एंटासिड ये वो फलाना डिमकाना चलेगा. उससे आपको लगेगा थोड़ी राहत मिल गई है, उसके बाद फिर खराब होगा और ऐसे करते करते आपको क्रॉनिक डिजीज हो जाता है. सो डिसअलाइनमेंट इज समथिंग विच वी न्यू. और हमारे यहाँ पहलवान जितने भी होते थे ना, अखाड़े जितने होते थे, वो तो सिस्टम ही खत्म कर दिया. गांव में अखाड़े होते थे एंड ऑल दोस पहलवान्स वर टॉट how to align your body. Without alignment they should not go for any kind of a wrestling sport. करने उनको मना कर दिया जाता. So disalignment is something that we need to do, and if you align your body we can easily come out of this and remain pretty healthy. ये लंबे समय से होने के बाद में फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है फ्लोरिंग. अगर आप अलाइन करते रहेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए. Okay, Dr. Kanika writes, my mother is suffering from Parkinson's disease since 3 years. Can she be cured through this chikitsa? She is taking naturopathy. Naturopathy is okay, but the thing is, you must understand Parkinson को, and please, you also use your own thought process and mind. अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, because there is lot to be done in terms of research. जो भी research है ना वो biased research होता है. The very way researches are done, you can't help the biasness of research. That is why a research goes on, then another research happens and it discards the first research. अब देखिए ना, एक बंदे ने कहा इलेक्ट्रॉन इज इंडिस्ट्रक्टेबल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उसको नोबेल अवार्ड मिल गया. जे थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उसको नोबेल अवार्ड मिल गया, है ना. फिर उसी के शिष्य ने, उसी के बेटे ने कह दिया कि ये वेव है, उसको भी नोबेल अवार्ड मिल गया. ठीक है ना. फिर एक बंदे ने कहा ये वेव और पार्टिकल दोनों है, उसको भी नोबेल अवार्ड मिल गया, श्रोडिंगर. उसके बाद एक बंदा आया हाइजेनबर्ग, उसने कहा ना तो ये वेव है ना तो पार्टिकल है, तो प्रोबेबल है, कभी वेव हो सकता है कभी पार्टिकल हो सकता है.
उसको भी नोबेल अवार्ड मिल गया। अब आप बताइए, ये तो बहुत बढ़िया साइंस है। पहले तो कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब, अब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल तो बहुत अच्छी चीज है जी। तो इसका मतलब अभी भी पार्किंसन के बारे में हम जितना जानते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, नॉट इवन 0.01%। With that, if we make an idea, we will destroy the human system. So with a half knowledge, half भी तो नहीं है, 0.01% knowledge, if you are creating an idea, we will destroy the world. That is what we have done. यही हमने काम किया। On the name of science, हमने साइंस को भी बदनाम कर दिया। On the name of science, we did our thing. हमने अपने काम किए, और वो हम नहीं, वो that is why I am saying फिरंगी बुद्धि सबसे बेवकूफ बुद्धि होती है दुनिया की, और उन्होंने हमको रूल किया पिछले 300 साल में, ऑब्वियसली सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो प्लीज ओपन अप योर माइंड्स। साइंस इज अ गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड बाय इंडिया। भारतीय मानुषी का गिफ्ट है तो पूरे दुनिया को साइंस, हमको क्रेडिट नहीं दिया गया बस। दूसरी बात ये कि द वे ह्यूमन बॉडी स्टडीज इज स्टडीड, और इसके मॉडल जो तैयार किए जाते हैं वो यूक्लिडियन प्रिंसिपल पे तैयार किए जाते हैं, linear mathematics, which our body is not. तो ये वहीं पे फॉल्ट लाइन है, वहीं पे फॉल्ट लाइन है। और आजकल तो हर चीज के बारे में कोई ना कोई डाउट निकल के आ रहा है। आरसीटी का मतलब क्या होता है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसपे सारा का सारा एलोपैथिक साइंस या एलोपैथी बेस्ड है। साइंस तो मैं नहीं कहूंगा, allopathy is still not a science. They think it is a science. So randomized control trial खुद क्वेश्चन मार्क में आ गया। अभी कहते हैं randomized control trial तो तरीका ही नहीं है ह्यूमन बॉडी को समझने का। तो इसका मतलब अभी तक जितना भी कुछ बोला जा रहा है वो सब गलत है। ऑब्वियसली नई चीजें निकल के आ रही हैं। सिंपल सी चीज, जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, ये गलत बात है। हार्ट पंप नहीं करता ब्लड को। तो ये चीजें लेकिन सामने आने में 5 से 10 साल और लग जाएंगे। तो इस पे बहुत पैसा लगा हुआ है, और लोगों की कमाई जुड़ी हुई है इसके साथ, खास करके वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कमाई फार्मा इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई है। तो वो इसको इतनी जल्दी रिवील नहीं करेंगे, बट हमें तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। तो व्हाट इज पार्किंसन? पार्किंसन का मतलब क्या होता है? आपका कंट्रोल कम हो गया ना आपके हाथ के ऊपर या लिम्स के ऊपर, आपका कंट्रोल कम हो गया ना। आप सिंपल तरीके से समझिए, मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं, इंस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा हूं। अभी कहते हैं इंस्टेंट सबको चाहिए होता है लोगों। कंट्रोल खत्म हो गया। कंट्रोल कैसे करते हैं आप अपने लिम्स को? कैसे करते हैं कंट्रोल? आप कोई भारी चीज उठाइए और उठा के रखिए उसको, कैसे कंट्रोल करते हैं? आप एक टांग पे खड़े हो जाइए, कैसे कंट्रोल करते हैं अपने बॉडी को? आप अपने डांस कीजिए कोई, और देखिए, आप अंदर देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ टू कंट्रोल योर एक्शन। आप सांस रोक के, वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड कंट्रोल्स योर लिम्स, कंट्रोल्स योर एक्शन। आपके डायनेमिज्म को कंट्रोल ब्रेथ होल्ड करता है। तो कंट्रोल खो गया तो वापस लाने के लिए क्या चाहिए? क्या खो गया? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी खो गई। तो वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना, उसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक करना पड़ेगा। कोई और तरीका है? कोई और तरीका नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ सपोर्टिव चीजें भी बताएंगे, जैसे कुछ रसायन, रस औषधि, जो कि इस पे सपोर्टिव काम करता है। इफ यू ईट गुड फूड, भाई फूड भी तो आपका शरीर ही हजम करता है। द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट, एसिमिलेट इट, ये भी तो आपके शरीर की शक्ति ही है। अच्छा फूड खाने से कोई मैराथन थोड़ी दौड़ने लग जाता है कि नहीं? तो आजकल तो अच्छे फूड से ही आपके नुकसान हो रहा है ना। वॉट एवर यू थिंक यू ईट गुड फूड, यू आर डूइंग हार्म टू द बॉडी। सो द डाइजेस्टिव एबिलिटी भी तो वो एबिलिटी है जिसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो फूड इज गुड, इट इज गुड, आप उसको सही कीजिए, मगर द स्ट्रेंथ दैट यू हैव लॉस्ट विद इन, दैट हैज टू बी रिकवर्ड। देयर इज नो ऑप्शन। देखिए, आपका हार्ट वीक होगा ना, एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा। क्या हुआ अभी पीछे? स्पोर्ट्स के लोग हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं ना। शेन वॉर्न गया,
good athlete, bodybuilders, they are dying of heart attack. Because even to do exercise, you have to have a strong organ capacity. Organ capacity अगर अच्छी है तभी आप एक लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, वरना कोलैप्स हो जाएगी बॉडी. तो एक्सरसाइज करने के लिए भी पहले कुंभक कैपेसिटी बिल्ड करो. अगर एक्सरसाइज भी करना है तो कुंभक कैपेसिटी बिल्ड करो. अगर पार्किंसन से निकलना है तो कुंभक कैपेसिटी बिल्ड करो. इसके अलावा ऑप्शन नहीं है. आप इसके लिए मेडिकेशन होता नहीं है और खाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा. Purna ji writes, if we are undergoing another Ayurvedic treatment like Panchakarma right now, can we still take the Kumbhak Yoga class? You can do anything. Everything, whatever you do, that will not create any difficulty for you if you do Kumbhak. है ना. कुंभक अगर आप करते हैं तो वो जो कुछ आप कर रहे हैं उसका नुकसान आपको नहीं. Panchakarma anyway is to build up certain factors of your body or give your body, get your body to a certain state of ease. Panchakarma is good. अच्छी बात है. बट पंचकर्मा तो आपका एफर्ट नहीं लेता ना, वो कोई दूसरा आपके ऊपर एफर्ट लगा रहा है. आप खुद एफर्ट लगाओगे तो आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी. दूसरा एफर्ट लगाएगा तो उससे आपके शरीर को कुछ आराम तो मिल सकता है, बट आपकी कैपेसिटी तो नहीं बिल्ड होती ना. तो आप कुछ भी कर सकते हैं. कुछ चीजें हम आपको कुछ समय के लिए रोक दें. जैसे अनिल जी ने बताया कि कपालभाति जो कर रहा है, हम बोलेंगे थोड़े समय के लिए रोक. Get your body into a certain sense of health and get your exhalation in your control and then you can do that. अगर वो चीजें जो कुछ समय के लिए हम आपको कुछ चीजें रोक सकते हैं, apart from that you can do all other pranayam. If you are doing any other therapy, you can go through all other therapy. We will not stop you. हम आपको रोकते नहीं. We will ensure that whatever you are doing, even if you are taking medicine, the adverse drug reaction, उसका साइड इफेक्ट जो है वो आपको कम हो अगर आप कुंभक कर रहे हैं. How many sittings of Kumbhak Yoga class will it take to help cure autoimmune diseases? Will 63 days be sufficient? See, the moment you start working upon the body, morning your autoimmune disorder can be a little worse, and in evening it can be down, it can be okay. आप सोच रहे हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अभी मेरा 10 यूनिट पे है तो फिर ये 6 महीने लेगा या 1 साल लेगा 10 से 5 आने पे. ऐसा नहीं है. आपका कोई 10 पे नहीं है ये. दिस इज योर आइडिया. इट कैन इमीडिएटली कम डाउन, बट टू कीप इट डाउन, कीप इट एट अ स्टेट, you need to continuously work upon the body. So how much capacity you have lost, कैसी कितनी कैपेसिटी आपकी कम हो गई, उस पर डिपेंड करता है. Also depends on the commitment. आप कितना रेगुलर हैं इसके साथ. For some it will work in few weeks, 2-3 हफ्ते में ही हो जाएगा. For others it might take a year also. कुछ लोगों को 1 साल भी लग सकता है. It also depends on the momentum of the disease. But रिवर्स करने की तरफ में जाएंगे तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी चल रही है तो उसको रोका जा सकता है जल्दी, और 100 किलोमीटर पे चल रही है तो टाइम लग जाता है. सिमिलरली दिस इज द सेम केस विथ ऑल द डिजीज. आपका मोमेंटम कितना है डिजीज का और आप कितने कमिटेड हैं. तो रिवर्सल इज समथिंग दैट विल हैपन 100%, बट हाउ मच टाइम विल इट टेक, इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल. Okay. Ravi Gojal ji writes, मुझे हिप का AVN है from last 5 years. बहुत दर्द होता है चलने में और मूवमेंट में. Is it possible to permanent treatment by this therapy? Yes. Easily possible. And देखिए, आप 3 चीजें अगर आप कर लो, आपको क्लियरली बताओ, 3 चीजें अपनी बॉडी में कर, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व. So build the rhythm of your body, build the balance of your body and strength. ठीक है ना. रिदम को भाव भी कहते हैं, बैलेंस को राग कहते हैं, स्ट्रेंथ को ताल कहते हैं. भाव, राग एंड ताल. भारत आपके देश के नाम में ही हेल्थ. रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम. आप अपने बॉडी का बिल्ड कर लीजिए. योर बॉडी विल स्टार्ट रिवर्सिंग एवरीथिंग, रिकवरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स.
अगर किसी को कहीं पे ज्यादा है, वी कैन टेक अ लिटिल सपोर्ट ऑफ सम नेचुरल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल कई एरियाज में लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता तो पेन किलर्स खाते रहते, पेन किलर्स वर्सन द सिचुएशन, खराब कर देते, तो वी गिव देम अ पेन ऑयल, एक ऑयल पेन ऑयल हम देते हैं, वो लगाते ही वो पेन खत्म हो जाता, बट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती ना, लगाते ही पेन खत्म हो, पेन removal of pain is not a solution. So they work upon the body, they do kumbhak, they do practices, use the oil so that it doesn't worsen up the situation. Slowly after a few weeks time they don't need that oil, फिर oil की जरूरत नहीं होती, problem solve हो जाती है. Okay, H.C. Kumaraswamy ji writes, a month back I have suffered blood clot and left part has become involuntary, undergoing physiotherapies. So what is blood clot? What is blood clot? Blood clot is or thickening of blood is a protective mechanism of human body. क्या बोल रहे हैं? थिकनिंग ऑफ ब्लड, जो थिक होता है ना, ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. सपोज कीजिए आपका ब्लड थिक नहीं होगा तो क्या होगा? अ पर्सन माइट ब्लीड टू डेथ, जरा सा कट लगा और गया बंदा. सो ब्लड का क्लॉट बनना, थिकनिंग ऑफ ब्लड इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ना वो अंदर बन रहा है कहीं, so that means you have created a risk inside. अंदर क्लॉट क्यों हो रहा है? Because you have created a risk inside, isn't it? आपने रिस्क बना दिया. अगर आपने रिस्क अंदर क्रिएट कर दिया तो वो तो बेचारा अपने आप को ठीक करने के लिए क्लॉट हो रहा है, पर आप समझते हैं कि क्लॉट होना गलत है, फिर ब्लड थिनर खाओगे. But if you eat blood thinners, what will happen? If your blood, the thickening ability of blood creates something called as tissues. ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. There are 7 stages of metabolism, from रस to रक्त, from gastric juices, or sorry, just the juices. When you eat a food, whatever food you eat, it converts into juices. From juice to blood, रस to रक्त, रक्त to मांस, मांस to मेद, मेद means adipose tissue, मेद to अस्थि, bones, अस्थि to मज्जा, bone marrow, and मज्जा to शुक्र, reproductive cells. ये बनेंगे ही नहीं. It is the condensation ability of every raw stuff which is needed to make it into something else. So blood thinners अगर आप खाते रहें तो what will happen? Your metabolism, the whole metabolism will go haywire. वो metabolism ठीक नहीं होगा. Now it has become so rampant, सभी लोगों को metabolic disorder हो गया. What is diabetes? It's a metabolic disorder. What is thyroid? It is a metabolic disorder. And don't think just these two are metabolic disorder. Your cancer is also connected to your metabolism. Every disease is connected to metabolism. Chronic disease. तो आप वो ब्लड थिनर खा के अपना रिस्क कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो? That is why I said, don't think science is science. आपको लगता है ना वो साइंस ने बोला तो साइंस, नहीं, वो तो नाम ले रहे हैं साइंस का. Slowly killing yourself is no science. Draining out the body and reducing the blood pressure is no science. आप जल तत्व को कम करके अगर अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेंगे तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी बॉडी की, इमोशंस खराब हो जाएंगे, हार्मोनल इंबैलेंस आएंगे. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जस्ट सी अराउंड, हाउ मेनी आईवीएफ्स. आपके घर में भी कोई ऐसी बहू बेटी होगी जिसको फर्टिलिटी का इश्यू आ रहा है, एंड यू डोंट इवन कोरिलेट कि आई एम ईटिंग अ ब्लड थिनर. आप तो सोचते हैं सब अलग अलग लोग होते हैं. नहीं, हमने ऐसे ही नहीं कहा वसुधैव कुटुंबकम, अहम ब्रह्मास्मि, हम ऐसे ही नहीं कहते. दिस इज साइंस. तो साइंस के नाम पे जो अभी चल रहा है, कम से कम अपनी बुद्धि लगाएं.
और देखें कि वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ना हाउ विल यू रिड्यूस द रिस्क? रिस्क कम कैसे करेंगे अपने अंदर का? ब्लड क्लॉट अंदर हो रहा है ना, सो देयर इज अ रिस्क इनसाइड, और बॉडी इसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो आप रिस्क कम कर दीजिए, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सिंपल। आप रिस्क कैसे कम करेंगे? तो एक बात बताइए, बहुत सिंपल तरीके से, यू कैन अंडरस्टैंड इट विथ योर इंटेलिजेंस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। द ओनली थिंग इज दे आर हैविंग अ टर्मिनोलॉजी फॉर इट विच यू डोंट अंडरस्टैंड। मगर एवरी टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, इजंट इट? तो आपको देखने को मिलते हैं कुछ बच्चे भीख मांगते हुए रेड लाइट पे। हैव यू सीन ऑल दोस किड्स आस्किंग? हाँ, तो उनको आप बारिश में भी वहीं देखोगे, धूप में भी देखोगे, ठंड में भी देखोगे, कुछ भी नहीं होता उनको, नथिंग हैपेंस टू देम। बट किड्स लिविंग इन गुड सोसाइटीज, बारिश भी हो जाएगी तो व्हाट डू यू से? अपने बच्चों को आप क्या बोलते हैं? ओ डोंट गो आउट, अभी सर्दी जुकाम लग जाएगा। तो कुछ तो इतने स्ट्रांग है, दे आर नॉट गेटिंग एनी डिजीज, एंड देयर आर सम पीपल हु आर इन एन नंबर ऑफ डिजीज। इतना रिस्क है, और उनमें रिस्क क्यों कम है? दे आर, हाउ हैव दे बिकम रेजिलिएंट? थोड़ा सा तकलीफ झेलना धीरे धीरे करके शुरू कर दें तो दे विल बिकम रेजिलिएंट। सो व्हाट इज कुंभक? इट इज एन एफर्ट। अगर आपकी शक्ति नहीं है अभी अंदर, तो आप जरा सा कुंभक करते हैं, ब्रेथ होल्ड करते हैं, या बॉडी को एक तरीके से फोल्ड करते हैं, मूव बेंड करके ब्रेथ होल्ड करते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। इफ यू डू इट जेंटली, योर रेजिलियंस विल बिल्ड अप। फिर रिस्क खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी का। यू गो थ्रू एनी सिचुएशन, नथिंग विल हैपन टू यू। सो ये तपस्या कही जाती है। दिस इज कॉल्ड एज तपस। हमने तो तपस करना ही छोड़ दिया। नाउ यू कैंट गो समवेयर टू डू ऑल दोस तपस, एंड तो क्या करें? घर में तपस कीजिए ना। आई एम गिविंग यू तपस। यू सी, in the next, if you do it in the next 6 months, after 6 months you go through any situation, nothing will happen to you. Now I was a person who used to get into viral infection very frequently. बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और कोरोना पीरियड में आई सर्व पीपल विथ कोरोना, नथिंग हैपेंड टू मी। कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि द रेजिलियंस वाज सो मच। I serve people with viral infection and even corona, nothing happened to me. ऐसा क्यों? उनको क्यों इतनी जल्दी हो गया और मुझे क्यों नहीं होता? I used to get into viral infection every month. Now for the last 15 years I have not got into viral infection. So what did I do? I increased the resilience of my body. ये हर एक को करना ही चाहिए. If you want to go through the process of life very smoothly and without getting into problems physically, mentally, emotionally, then you should build resilience. And the most fastest way to build resilience is Kumbhak. So you build your strength, balance and rhythm. I said Bharat, Bhav, Rag, Tal, तीनों को अगर build करना है, कुंभक कीजिए, तीनों build हो जाएंगे. The fastest way to build all these three things is Kumbhak. Prem Bahelji writes, I am 78, non-diabetic, but having balancing problem. Half left foot sole is having numbness. अभी क्या बोलूं मैं? Please come to the program. Work upon the body. You must have time, a little time. Spend a little time on yourself. 1 घंटा अपने लिए निकालिए दिन में. आप देखेंगे आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा. You'll be able to do lot of things in life because retirement is not human concept, right? You have a little time to experience life. थोड़ा टाइम मिला है सबको ना, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं. वो बचपन से इतने एज में आ गए, पता भी नहीं चला. So life is a little time to experience. You should have the strength to do a lot of activity, not get into troubles and problems, and experience life beautifully and in a most intense way. That will satisfy you. जब तक आप लाइफ को अच्छे से अनुभव नहीं करते, आपकी संतुष्टि नहीं होने वाली. तो आध्यात्म भी उन लोगों के लिए नहीं होता जो तृप्त नहीं होते, जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का पूरा नहीं करते. तो इवन टू गो टू अ स्पिरिचुअल
dimension of life, you must be satisfied with the experience of life. And that is what something कुंभक will give you. कुंभक को मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये जीवन में और जीवन के बाद, जो LIC बोलता है ना, वो LIC तो नहीं कर सकता, मगर कुंभक जरूर कर सकता है. Okay, Vijay Kumar Jain ji writes, I have glaucoma after retina detachment surgery from 2012. Is it curable? How many testimonials should we give you? ग्लूकोमा से जो ठीक हो गए, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं. डायबिटीज है जिसको, कैन यू थिंक ऑफ कमिंग आउट ऑफ ग्लूकोमा? दैट पर्सन हैज कम आउट ऑफ ग्लूकोमा. सो मेटाबॉलिज्म अगर आप ठीक करते हैं अपने बॉडी का, and again I'll get into that ki why it happens. Not necessarily I should go towards it. Everything in your body is interconnected. Your heart doesn't work without your liver. Your liver doesn't work without your kidney. Your kidney doesn't work without your nervous system. सब जुड़े हुए हैं. हम इसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं. That is very fundamental flaw of how we are looking at this body. तो इसको अगर आप देखें कि ये एक इंटीग्रल एंटिटी है. So glaucoma can happen because of many factors. We will diagnose you, find out what is weak. We'll customize your module, give you special methods to come out of it, and one can come out of glaucoma. ये मैं आपको, हमारे पास टेस्टिमोनियल हैं. Hindu ji writes, I am suffering from osteoporosis of lumbar region and hip joint. Can it be? कैल्शियम खाने से किसका है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ? Give me one example in the whole world. दुनिया में एक एग्जांपल बता दीजिए कि कैल्शियम खा के किसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ. सो ऐसा नहीं है. वी आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वीकनेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. आपका शरीर चीजों को एब्जॉर्ब करने में की एबिलिटी उसकी कम हो गई. इफ यू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, वन कैन इजिली कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. बहुत आसानी से ऑस्टियोपोरोसिस निकलता है. आइडियली योर बोन डेंसिटी शुड बी वेरी वेरी हाई. आपकी बोन डेंसिटी जितनी हाई होती है, आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती है. तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है. अच्छा, एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या करते हैं? सपोज कीजिए आप मुंह से पानी खींच रहे हैं. खींचने की क्षमता, आपका एब्जॉर्प्शन की क्षमता दोनों बराबर है. पुलिंग कैपेसिटी इज सेम एज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, राइट? तो कुंभक से ये पुलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, absorption बढ़ जाएगा. And there are people who have come out of osteoporosis. It's a very easy thing and a simple thing to come out of. But by taking calcium, nobody has come out of osteoporosis. Rather, if you take calcium for a long period of time, the chances of getting into breast cancer increases by 200%. Breast cancer का chance बढ़ जाता है. Rakesh ji writes, kidney, high creatinine and protein loss through urine along with some other ailments. Age 15. Once again, related to what I said, protein खाओ. The second thing, risk of the body has got increased. जब भी आप बॉडी में कुछ ऐसी चीज डालते हैं which is not suitable for your body tries to throw it out. उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है. So आपने जितनी दवाइयां खाई है वो किडनी पे इंपैक्ट करता है, लिवर पे इंपैक्ट करता है. आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, किडनी पे इंपैक्ट करेगा. आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, किडनी पे इंपैक्ट करेगा. So किडनी इज सपोज टू थ्रो एवरीथिंग अननेसेसरी आउट ऑफ योर बॉडी. डिटॉक्स के लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किडनी की. और भी जगह से डिटॉक्स होता है, बट मेजरली इट इज किडनी ओनली. तो कैन द क्रिएटिनिन लेवल बी रिड्यूस? यस, थ्रू कुंभक. वी हैव केसेस वेयर creatinine level has reduced. Kidney cases are something that there is lot of controversy around it. So the way allopathy treats a kidney patient, they can't correct kidney. वो किसी का भी किडनी ठीक नहीं किया. एक बार डायलिसिस शुरू हुआ तो किडनी ट्रांसप्लांट आउट, फिर खत्म बंदा, चाहे कितना भी बंदा हो. You can take many cases. In young age, because of kidney transplant, people have died. अपने तो क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन सारे ऐसे चले गए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, इस तरीके के लोग. So there is no solution to kidney in allopathy. First of all, the controversial part is they stop everything. ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना. जो चीज आपको ठीक करेगी वो भी नहीं लेना. ये नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है.
but Kumbhak can certainly help. To a large extent, there are Rasaushadhis which can help. But again, एक बहुत ही अजीबो गरीब नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है. खुद तो ठीक नहीं करते, दूसरे को ठीक करने से भी मना कर देते हैं, है ना. तो ये तो अब क्या बोलें इसको, ये तो बहुत गलत चीज है. बट यस, प्लीज हेल्प योर किडनी. टू कुंभक, हेल्प योर किडनी, रिड्यूस योर किडनी लेवल. किडनी लेवल नीचे आ जाएगा. स्वामी जी, कैन यू टेक मोर क्वेश्चंस? कितना टाइम है हमारे पास? एक लास्ट और ले लेते हैं. Okay. A Pragati Bhavsar ji writes, my husband has uric acid problem and then he cannot walk. There is inflammation in his feet. What to do? इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुई? लिवर से शुरुआत. ठीक है ना, लिवर से यूरिक एसिड प्रॉब्लम शुरू होती है. तो क्या करेंगे? लिवर को रिजुवनेट करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए 3 प्रोसेस सिखाते हैं. 3 प्रोसेस जो कुंभक थेरेपी का मिडिल पार्ट है. प्रकृति शूल कुंभक, काका खेचरी कुंभक, शूलराज कुंभक. ये 3 चीजें हम आपको सिखाते हैं. टू रिजुवनेट योर लिवर, to rejuvenate even the kidney, and to rejuvenate your whole heart and lungs. ये जो 2 पार्ट है ना, ये एक साथ काम करते हैं. तो उसको रिजुवनेट करेंगे. 3 चीजें हम आपको देते हैं. So anyway, we are in the process, in the program itself we have embedded it. उसके अंदर है ही, लेकिन we will diagnose you also and we will give you special methods also. So with that, you can write down your questions. If you still have questions in the chat box में आप डाल सकते हैं. अपने WhatsApp ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. If there will be a kind of a difficult question, I'll be answering it. Otherwise, you will get the answer. आपको आंसर मिल जाएगा. मगर एक बात मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ. See, your body is just like a very, very intelligent species, entity, but it can't talk the language you speak. आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है, मगर वो आपकी भाषा नहीं बोलता. और इसी वजह से हम इसको समझने में गलती कर रहे हैं. So, आपका शरीर किसी भी प्रॉब्लम से आपको निकाल सकता है. 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं थी. 100 साल पहले किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं था. 100 साल पहले किसी को थायराइड नहीं था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं था, कैंसर नहीं होता था. ये हमने बनाया हुआ है. बिकॉज वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बॉडी. बॉडी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्पीशीज. लाखों सालों से इसने हेल्दी रखा हुआ है. ये पिछले 100 साल में ही क्यों क्रैश हो रहा है? क्योंकि ये हम क्रैश कर रहे हैं. और ये बेचारा सारे इंडिकेशन देके केवल ये बताना चाहता है, प्लीज हेल्प मी, आप मुझे मदद तो करो. मदद करने की बजाय इसको हम और खराब कर देते हैं. सो आपकी लाइफ ही तो खराब हो रही है इससे. किसी के आइडिया पे अगर आप चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये सही आइडिया है, तो आप गलत है, क्योंकि आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं हो रही. प्लीज हेल्प योर बॉडी. योर बॉडी कैन क्योर यू. आपका शरीर आपको ठीक कर देगा. ये 100% गारंटीड, क्योंकि इसके पास सभी तरीके हैं ठीक करने के. केवल इसको सही तरीके से आप मदद कीजिए. So help it recover the strength and forces that it has lost, recover the immunity, recover the factors which run this body. उसको रिकवर कीजिए. आपकी लाइफ सुंदर हो जाएगी. जो लटके चेहरे हैं उन पे स्माइल आ जाएगी. This is what we want. You can easily come out of lot of problems of life, not only physical, mental, emotional. Mental problem कोई solve नहीं करेगा. कुंभक mental problem 100% solve करेगा. Please work, help your body, and let's make the world a healthier place, a happier place. With that, we'll end this session. Thank you for all of you for joining the webinar. So please think over it. अपनी बुद्धि लगाइए, सोचिए, अपने को हेल्दी बनाइए. आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं.